चलिए और अब बात करते हैं बड़े विवाद की। आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। सवाल यह है कि क्या दूसरों की बेटियों को संन्यास का पाठ पढ़ाने वाले जग्गू वासुदेव की मुसीबतें बढ़ने वाली है। दरअसल ये सारा विवाद एक पिता की याचिका से शुरू हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने ईशा फाउंडेशन के आश्रम पर छापा मारा है। लड़कियों की तलाशी के लिए कमरों में भी उन्हें ढूंढा है। पुलिस कई घंटों तक आश्रम में रही और अब इस मामले में सदगुरु की मुसीबत बढ़ने जा रही है। दरअसल कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आध्यात्मिक गुरु जग्गू वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की डिटेल्स पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। 4 अक्टूबर को एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मद्रास हाईकोर्ट में डिटेल्स की रिपोर्ट सौंपेगा। डीएसपी लेवल के अधिकारी की अगुवाई में 150 पुलिसकर्मियों ने आश्रम में तलाशी की। इस दौरान पुलिस ने आश्रम में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की है। यह सारी रिपोर्ट अब 4 तारीख को अदालत में पेश की जाएगी। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि यह बड़ा विवाद है। दरअसल तमिलनाडु के एक रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर ने एक पिटीशन दाखिल की थी कि उनकी 2 बेटियां, एक बेटी 42 साल की और दूसरी बेटी 39 साल की, वो जब से ईशा फाउंडेशन में गई हैं उनका ब्रेन वॉश किया गया है। उनको खाने पीने में ऐसी चीजें खिलाई जाती हैं जिनसे कि वो अपने परिवार से दूर होती नजर आ रही हैं। और इसी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिन सदगुरु की बेटी खुद अपने जीवन में वेल सेटल्ड है, वो मैरिड है, वो दूसरी लड़की या दूसरी महिलाओं को क्यों सन्यास का जीवन अपनाने के लिए बोलते हैं? क्यों उनसे कहते हैं कि आप अपने बालों को शेव कीजिए और मंक की लाइफ को अपनाइए? और इसी को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद छिड़ा है। कल आपको यहां ये जानकारी दे दें कि ईशा फाउंडेशन के दुनिया भर में 300 सेंटर्स हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के मेन सेंटर्स कोयम्बटूर में है, बेंगलुरु में है और दिल्ली स्थित छतरपुर में है। छतरपुर में और भी ऐसे कई स्पिरिचुअल सेंटर्स आपने देखा होगा। सदगुरु वो स्पिरिचुअल लीडर हैं जिनके बड़े बड़े वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाता है। उनकी बड़ी किताबें हैं। कई बार अगर आपने उनके वर्कशॉप अटेंड नहीं भी किए होंगे तो आप इंटरनेट के माध्यम से उनको जरूर एक न एक बार अपने जीवन में सुने होंगे। कई लोग सदगुरु को फॉलो करते हैं और कई लोग इसी फॉलो करते हुए इनके सेंटर में जाते हैं, इनके वर्कशॉप को रजिस्टर करते हैं और वहां जाके उनका जीवन बदल जाता है। मद्रास हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से ईशा फाउंडेशन की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया है। ईशा फाउंडेशन का यह कहना है कि लोग जब यहां आते हैं तो वो वॉलंटरली यानी कि अपनी स्वेच्छा से इस कदम पर, इस पथ पर चलने की बात करते हैं। हालांकि जो 150 पुलिस अफसर वहां पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर रह रहे वॉलंटियर्स से बात की है, उनसे जाना है कि वहां की लाइफस्टाइल क्या होती है और इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। संजय कुमार चड्ढा है, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कामराज जी भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कामराज जी इन 2 बेटियों के पिता हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल की है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है ये जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। संजय कुमार जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ संजय जी कि मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है और मद्रास हाईकोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि वो सदगुरु जिनकी खुद की बेटी वेल सेटल्ड है, अपनी लाइफ में मैरिड है, वो लाइफ में जो पड़ाव होता है, जीवन का हर पड़ाव में शादी भी एक पड़ाव ही माना जाता है, उसको क्रॉस कर चुकी हैं। 10 साल हो गए हैं उनकी शादी को। मैं कल ही उनका इंस्टाग्राम पेज देख रही थी। उन्होंने अपने पति के साथ 3 सितंबर को शादी के 10 साल की सालगिरह मनाई थी। बहुत बड़ी भरतनाट्यम डांसर भी हैं, खुद भी योगा के सेशंस लोगों को सिखाती हैं। इन सब के बीच में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति की खुद की बेटी सेटल्ड है वो दूसरों को क्यों सन्यास की राह पर चलाना चाह रहा है? क्या मायने? देखिए, मायने तो बहुत क्लियर हैं। आपने सारी बात बहुत विस्तार से बता ही दी है। मैं कानून की व्यवस्था बताता हूं। कानून क्या कहता है? क्या एक व्यक्ति को कोई अधिकार है शादी का? क्या कोई उसमें कोई हिंड्रेंस कर सकता है? कोई उसमें बाधा लगा सकता है? तो कानून बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में जो वृहत अधिकारों की बात करता है, राइट टू लाइफ की बात है, तो शादी को भी एक राइट टू लाइफ से ही जोड़ के देखा गया है। एक अहम पहलू है, जैसे आप भी फरमा रही थी अभी, एक ह्यूमन लाइफ का। तो निश्चित तौर पे अगर किसी भी प्रकार से एक व्यक्ति को उस कार्य को शादी करने के लिए ऐसा ब्रेन वॉश करने की बात, जैसा कि पिटीशन में लिखा गया है, वो कही जाती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए विधित जो अधिकार हैं उनका भी विरोध है।
वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में शादी का अधिकार स्पेसिफिकली नहीं मेंशन्ड है, ये मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ। लेकिन हमारे कई जजमेंट्स हैं, 2-3 जजमेंट्स मैं अभी देख रहा था जब आपने मुझसे संपर्क किया उसके बाद, तो उनमें बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो शादी का अधिकार है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल अधिकार है, और उस अधिकार में अगर कोई हिंड्रेंस करता है, कोई बाधा उत्पन्न करता है, तो वो सही नहीं है। संजय जी, हम जहाँ उस देश को बिलोंग करते हैं जहां पर मैंने देखा है कि परिवार जो है अपने जीवन की सारी जमा पूंजी अपने बच्चों की शादी में लगा देते हैं। कितने धूमधाम से शादियां होती है, बढ़ चढ़कर लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं और बड़ा भव्य, मतलब शादी से बड़ा कार्यक्रम हिंदुस्तान में, इससे बड़ी सेलिब्रेशन मैंने तो कहीं नहीं देखी है। संजय जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो कामराज जी हैं, जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, आप सोचिए कि बड़ी यूनिवर्सिटी से बड़े पद पर प्रोफेसर रह चुके हैं वो, उनकी जो दोनों बेटियां हैं, बड़ी बेटी जिनकी उम्र 42 साल की है, उन्होंने अपनी एजुकेशन यूके से की है। 2008 तक वो एक वेल सेटल्ड लाइफ जी रही थी, अच्छा खासा पैसा भी कमा रही थी। हस्बैंड के साथ उनका डाइवोर्स होता है और वो यहाँ आती है। उनके फादर को ये फील होता है कि उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और संजय जी, ये पहला ऐसा मामला नहीं है जो किसी स्पिरिचुअल लीडर पर ब्रेन वॉश या किसी फाउंडेशन पर ब्रेन वॉश का लगा हो। क्या संजय जी वाकई ऐसा होता है? क्या जब लोग आध्यात्म की तरफ जाते हैं तो उनको शायद ये पता नहीं होता है कि वो किस मंशा के साथ जा रहे हैं या उनकी जीवन की क्या स्थिति होती है कि वो आध्यात्म की तरफ जाते हैं, लेकिन क्या फाउंडेशंस, बड़ी बड़ी फाउंडेशन जो स्पिरिचुअलिटी की बातें तो करती हैं, क्या वाकई वो ब्रेन वॉश करती हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कोई भी अगर बात होती है किसी भी प्रकार से, ये जो बड़े गुरु लोग होते हैं, या जो एक जिन पे भगवान के शायद साथ ही उनको समरूप ही रखा जाता है, समकक्ष ही रखते हैं उनके जो मानने वाले लोग हैं, तो उनकी बातों का तो निश्चित तौर पे एक व्यक्ति के ऊपर बहुत प्रभाव होता है, हृदय के अंदर तक पहुंच के, और उनमें उसका बिल्कुल प्रभाव होता है। अब देखने की बात यह है कि इस पर्टिकुलर केस में जो आज हम लोग के समक्ष है, क्या स्थिति है, कैसा वहां पे किस तरह का, जैसे कि अभी आप बता रही थी कि एक टीम ने कई अन्य लोगों के बयान भी लिए हैं जहां पे ये बताया गया कि उनसे पूछा जा रहा है, उनसे बात की जा रही है कि क्या किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, क्या क्या चीजें होती है। जब उन सबको समावेशित किया जाएगा तभी पता चल पाएगा क्या क्या इस प्रकार का ब्रेन वॉश हो रहा है कि नहीं। देखिए, यहां पे सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो लगता है वो बात यह है कि संज्ञान का लेना। जो चेन्नई हाईकोर्ट है, उन्होंने इसको बहुत एक कठोरता से कहना, मेरे ख्याल है राइट वर्ड होगा, कि इस चीज को एक जो पिता है उसकी मनोस्थिति को समझते हुए इस पर्टिकुलर चीज में एक्शन लेने के लिए बात किया है, और यहां तक कि निर्देशित किया अधिकारियों को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जो जाके ये बयान वगैरह ले रहे हैं। तो अपने आप में एक पूरा जो प्रारूप है, जो वहां पे रह के जो बालिकाएं हैं उनके मन में किस तरह की बातें ठीक है संजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। डॉक्टर एस कामराज हमारे साथ जुड़ गए हैं और वेलकम ऑन आवर शो डॉक्टर कामराज इन सच अ शॉर्ट नोटिस। Please talk in whatever language you are comfortable. I would want to know this from you. What happened? What went wrong with your daughters? The two daughters that we have been talking about. What happened with them? When did they join Isha Foundation? Yeah, I was working in the Tamil Nadu Agriculture University as professor. My wife was running a NGO 41 years. When you want to go through the tribal villages, we have to pass through the Isha where there was no building at all at the time. A small hut was there. The Jaggi was there, used to sit in the hut, in front of the hut, and she used to ask us, well, you can merge your NGO with our Isha Foundation. No, how it is possible? You are doing for yoga, we are doing for social service. It is not possible at all. Because you are getting very good respect from the tribal community. When you happen to the tribal villages, they are driving away from the villages. That's why we are asking you to merge your NGO with our foundation. We flatly refused. At that time, he planned to trap my daughter. She was studying in Anna University, Chennai. When I was working warden in Tamil Nadu Agriculture University, they approached me
to conduct the Isha classes inside the university. I told our university is not permitted inside the campus. If you want anything, you outside the campus, you organize. It is not possible. Dr. Then they- Kamraj, who was in touch with you? People from Isha Foundation or Sadhguru? Who was talking to you? Don't Sadhguru. He's a Jaggi Vasudev. He's a pakka fraud god man. So Sadhguru is a respectable person. Don't say like that. Jaggi Vasudev asked to join merge our NGO with him. We refused. Then the Jaggi has gone to Anna University, Chennai, and they convinced the officials to conduct the yoga awareness camp. From the first year onwards, he started to motivate them. Your education is useless. If you join in IT companies, the IT owner will earn the money. It is male dominated. Your husband will see you as a machine delivering device only. You cannot achieve anything. Your father is saving only 1 lakh families only in around. These are the tribal families. If you join with us, we can 2 crores of people. Those are having no food, those are having no cloth, no shelter. We can do wonderful service. That way he is brainwashing the students. Okay, Dr. Kamraj, both of your daughters have said this in courtroom that they went to Isha Foundation voluntarily. Do you have any statement on this to comment? No, they are in the verge of their control. If anything they say against us, when they went to last time to meet them, they are crying. Don't come here. Your life is under threat. Don't come. They are crying. Then you can understand the situation. Whatever they tell, they will tell in the court. We are 18 years old. We are willingly staying there, but that is not the truth. Without our permission, without informing, this is the way of a sannyasi is doing. He is telling the Anmigam and other things. He is without informing. He changed the name. When you went to inquire with Kida Lada, no such person inside the ashram. Thousands of people name were changed in the Isha without informing. Were the names of your daughters were also changed? Where are your daughters right now? Are they staying with you or are they at the Isha Foundation? In Isha Foundation only. After changing their names. When my father died, when I approached them, they told Isha will not permit. We have death agreement we have signed. Until our death, we will not go out. We will not attend any family function and other thing. That is the rule of the Isha they were telling. So since how long are your daughters not in touch with you? We are struggling for the past 8 years. In 2016, we have filed a HEP petition in the Chennai High Court. At that time, without producing, they managed to form a committee and the district judge and SP went to the Isha Foundation and they obtained a letter from my daughters saying that they are 18 years old, they are staying on their will. Then they closed the file. But they permitted us, whenever you want to see the doctor, your 2 daughters, go and see them. That permission they are given. But 6 months they are allowed to see our daughters. After that, don't come here. If you come, lot of crowd is there, Isha name is spoiled. You should not come to meet your daughters. Then they filed a case in the local court. Because of his visit to the Isha, our name is damaged. Don't allow him. Through my daughter. The daughters have filed the case against us not to come to Isha. That case was dragging for 6 years. Then finally I went to Chennai High Court. The local court judge is not delivering. Because of this, Isha is not permitting, your case is under pending. Then they dismissed. They appointed new judge. That judge has dismissed my daughter's petition. After that also they are not allowing to meet. 2 months back, my elder daughter is making the telephone saying that my younger daughter started fasting until death. If you organize the media and get public apologies for legal procedure against recovering them. So, and Dr. whatever. Kamraj, is it correct to say that your daughters went against you, against their own family due to their stay at Isha Foundation? Were they brainwashed to this level? Exactly, sir. Without informing us, they joined. The elder daughter who was London to Isha, she went to recover the younger one. But after 10 days after arrival, we were told that we have reached the Isha. My elder daughter told. When we went there, both of them are monks. My missus rolling in the ground, shouting, "Oh, what you have done? We are alive, but they are without hair on the head. Who made you like that?" They were laughing on us. They are 18 years old. He cannot do anything. There are 2,000. Okay, Dr. Kamraj, when was the last time you met your daughters? 3 months back, for the birthday, they asked to come. Do they come to you to see you? Do they come to meet you or your wife? Do they come to see their own mother? Or you guys go to Isha Foundation?
As per the Isha Foundation rule, they are never allowed to go outside to meet their parents. We have to go there. Even though my wife is suffering from fever and other things, we went to there and we met them. They told Namaskaram, you have seen, go. That's the language they used. So, Dr. Kamraj, what do you expect from the court now? Because Madras High Court made a very strict comment on Isha Foundation, saying somebody whose daughter, about Sadhguru, saying somebody whose daughter is already married and well settled, how can he ask others to shave their heads and become monks? So, it's a very strong statement that has been given by Madras High Court. Do you see that in coming time you will be given justice, your daughters will be given justice? Definitely, I am waiting. For the first time now, 200 police are entered the Isha and inquiring them. What is going on? They will inquire. I expect justice from the police and the court. Dr. Kamraj, do you know anybody else apart from your daughters who you think have been trapped by Isha Foundation or have been brainwashed? Any other case that you want to talk about? Yes. They used to come my houses. If say anything against Isha, they will kill us. Because you are a retired professor, you are running more than 5,000 self-help groups covering 1 lakh families. You are safe. If you speak anything against Isha, will be no way, will be thrown away. Therefore, we are waiting. You please help us. You file the case. You fight. When your daughter comes, let our children also let them come home. We are waiting. They are not able to speak openly against Isha. So, Dr. Kamraj, you know such people who have their opinion against Isha Foundation but are not willing to come and talk in open? Yeah, I will give now the court case is going on. For the next 1 week, I will not be able to give the further details. Okay. After the Okay. I'll give you all the details. Respecting your privacy and keeping this confidential, I would not want to ask you further questions on that, but I definitely want to know, Dr. Kamraj, it was when that you realized that you are not able to connect with your daughters or your daughters have been brainwashed. Also, there was a comment in your petition that said that they put something in the food that your daughters have gone against their family. Do you think there is something like that? Yeah, it's happening. The food way in which, because you should not take onion, garlic, tamarind, that too only morning of food, evening only. There's no meals at all. The way in which, if anything they ask about, when they make a phone call to us, they will be locked in a dark room and no food will be given. That is a punishment, silence hour. Because of silence hour, Subhasri died some 1 year back. After the silence hour, she ran away from Isha Yoga Center, 200 meters away. Her body was found in the well. Another person, Ganesan Alais Pauduta, that Samyar is close to Jaggi Vasudev. Now brother is filed in a HPC petition in the High Court. Still they could not trace it. He is telling Adiyogi is powerful God and he will do everything. The Sannyasi working with Jaggi itself, they could not find out. That is the stage. Okay. It's and fraudulent activities. Dr. Kamraj, are you comfortable talking in Hindi? No, madam, I am not comfortable. Okay, not a problem. Also, do let us know, were there any threat calls that were given to you? Like you said that there are people who know are not willing to speak against Isha Foundation or Sadhguru, but then there are many that you know who are waiting for your daughters to come out of Isha Foundation so that their own children can come out. Is there any threat that was given to you before this or ever since the case has started happening? I am having a lot of threat and everything. Now I am not supposed to. I am facing. I will not supposed to let out now. At the appropriate time, I will tell that one. Okay, going ahead and going further, Dr. Kamraj, what do you think is going to be the process? Because 4th October has been the date that has been given by Madras High Court. The additional public prosecutor will submit a status report on Isha Foundation? Yeah, because Judge was asking what happened in Isha. 2 weeks back, Isha doctor was put under Boxa case. He molested 12 girls of government school. That's why now I am afraid of my daughter staying there. The Isha doctor itself involved in outside the Isha. What will happen inside the Isha? Therefore, I am praying the Lord. Dr. Kamraj, that doctor that you are mentioning who had cases of molesting 12 girls, is he with the Isha Foundation? Has there been any action taken against him? Because the case has already been filed under POXO Act. Yeah, case is filed.
The inquiry officer went on live. That is a muscle power, money power the Isha is having. After filing the case, the inquiry officer is on leave. No progress. The Isha vehicle was not seized. The Isha who are involved in the molestal cases, nobody was arrested beyond the doctor. Nothing happening, no progress. So what do you expect now, Dr. Kamraj? Do you have faith in the system in Madras High Court, and you think that the justice will prevail now that the hearing has started? I am confident that Madras Court and police will render the justice. I am waiting for the justice, madam. Do you have people, those who are supporting you, Dr. Kamraj? Do you have, because there are many followers of Isha Foundation and Sadhguru, but then there is a section of society who does not believe into this. Are you in touch with those people? Is there anybody from the system supporting you? Yeah, a lot of people were supporting. Once they expose what is going on inside, day by day I am getting more support from public organizations, well-wishers, environmentalists, all people, because he is destroying the river, he is destroying the agriculture land by letting the wastewater of the Isha, he is established ashramam in the elephant corridor itself. Therefore, everybody is annoyed. The way in which the Isha Foundation, it's against the environment, it's against the agriculture, natural, everything. Therefore, everybody day by day they are getting against Isha. Dr. Kamraj, is there any money that's involved by the volunteers that they take or they give? Is there any kind of fraud that these people do apart from brainwashing that you have just mentioned, according to you? Yeah, my daughter was earning more than 5 lakhs in London. Now she was not paid single pay. There is no medical facility. There is no that government schemes. What you get under ESD something. Nothing was provided. Only they are slaved. They are made to work for 12 hours, 15 hours without paying a single pie. They are brainwashed. Dr. Kamraj, what do they work there at the foundation? Are they being connected with the spirituality? Do they talk to spiritual leaders? Or is there any work like you are mentioning? What works do they do there? What is their daily routine? हो सकता है नेटवर्क इशू रहा हो इनके साथ, क्योंकि ये ट्रैवल कर रहे थे जब हमारी इनसे पहले बात हुई थी, और जब दोबारा जुड़ेंगे तो मैं दोबारा से इनका रुख करूंगी। संजय जी, आपने सुना काफ़ी गंभीर बातें डॉक्टर कामराज ने कही है, और ये वो बातें हैं जिनको इग्नोर किसी भी लेवल पर नहीं किया जा सकता है। वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि उनको थ्रेट्स कॉल मिला है, लेकिन एक ऐसा भी तबका है समाज का जो उनके समर्थन में आया, क्योंकि लोग परेशान हैं और लोग डर की वजह से अपना नाम सामने नहीं ला सक रहे हैं। देखिए, जो तथ्य इन्होंने सामने रखे हैं कंचन, निश्चित तौर पे वो सब बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन पे सामने आएंगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलेगा क्या सत्य है। तो बहुत अहम पहलू है, समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार से कितना चीजें जो इन्होंने कही हैं वो सत्य है, और उसके परिणाम स्वरूप जो भी बात सामने आएगी उस पर एक्शन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि साक्ष्य भी पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो इन्वॉल्व हैं वो तमाम साक्ष्य निकालेंगे, अगर इनके द्वारा बताए गए तथ्यों में दम है। तब हो सकता है कि असत्य भी हो बातें, क्योंकि जो ईशा फाउंडेशन सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, लेकिन प्राइमा फेसी हम उनको ऑन द फेस ऑफ इट कंचन नहीं ले सकते, क्योंकि यू नेवर नो। ईशा फाउंडेशन ने, जैसा अभी आप बता रही थी, बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज को मना भी किया है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर कामराज दोबारा जुड़ गए हैं। मैं क्लोजिंग के टुवर्ड्स हूँ। डॉक्टर कामराज, आई वुड लाइक टू नो योर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑन दिस। व्हाट डू यू थिंक, once everything is sorted, once the court cases are done, do you think that your daughters would like to live with you the rest of their lives? Because you are also in an aging phase. Court also mentioned this. What are you expecting after the court is finished? The case is ended. I'm confident. I hope that my daughter will rejoin with us. We are already doing a lot of social service activity through our 40-year-old NGO. We expect our daughters will join with us. I'm confident that the police and the court will render the justice to me. Also, Dr. Kamraj, there were 150 police officers who went to Isha Foundation yesterday to talk to volunteers and see what kind of lifestyle do they follow. Any
statement would you like to give on that? I don't want to comment when the case is on the court, madam. All right, thank you so much for joining us and keeping your views in front of everybody because that was very important. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एस कामराज। ये याचिकाकर्ता प्रोफेसर है, रिटायर्ड प्रोफेसर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं। यही उन दोनों बेटियों के पिता है जिन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट संजय आपसे लेना चाहूंगी। आपको क्या लगता है गोइंग अहेड कई ऐसे फाउंडेशंस हैं और पिछले कई समय से हम ये लगातार देखते आ रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो एक मास्क लगाया जाता है, क्या आपको लगता है अब वो खत्म होगा और अब ये वक्त आ रहा है? देखिए, अगर कहीं पे भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, कानून उनको परमिट नहीं करता है, तो उनमें एक्शन होना ही चाहिए। और इतनी बड़ी फाउंडेशन जो काफी काम भी कर रही है, हम सब जानते हैं, और उसका प्रचार प्रसार मीडिया ने भी बहुत पहले भी किया है, हमने देखा है। और तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो निश्चित तौर पे बहुत दुखद होंगी, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा पाया जाता है, जैसा कि एलिगेशन डॉक्टर कामराज ने अपने बच्चों के विषय में लगाए हैं, अगर ये तथ्य सामने आते हैं और वो सही पाए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक सख्त एक्शन लिया जाएगा फाउंडेशन के ऊपर, और ये एक नजीर बनेगी जिससे कि आगे आने वाली कोई भी फाउंडेशन इस तरह बहुत बार सोचेगी और समझेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार चड्ढा हमारे साथ जुड़ने के लिए और लीगल पर्सपेक्टिव समझाने के लिए। डॉक्टर एस कामराज जो कि याचिकाकर्ता प्रोफेसर थे, उन दोनों बेटियों के पिता थे, उनको सुना आपने और ये जरूरी भी था कि उनका पर्सपेक्टिव हम आप तक पहुंचाएं कि वो